गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर देखा जोटा अच्छी सेल जंक्शन जोटा कि आमर कोर पेपर 4 रे अच्छी सेल बायोलॉजी रे। तो जो मैंने B.Sc सेकेंड सेमिस्टर रे पढ़ुच से भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। तेणु आशा रखुची तुमको ये वीडियो पसंद आसीबो। मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी जो मैंने भी आज मो चैनल नुआ अच्छो से जाकि डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास गुड़ाक देखिपर एवं मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने को भूलिब नहीं। तो देखिए प्रथम आम सेल जंक्शन कौन ता विषय जानिबा। तो देख देयर इज ए स्पेशलाइज्ड सेल एंड सेल मैट्रिक्स जंक्शन। आम जानी कौन सेल भितर गोटे जंक्शन थाए किंबा सेल मैट्रिक्स रो जंक्शन थाए जहाँ आम सेल जंक्शन बोली कहू। ठीक अच्छे। तो व्हिच यूजुअली अपियर्स लाइक डिस्क्रीट पैच है जोटा पैच टाइप रो थाए। अपियर केमती थाए पैच टाइप रो। पैच माने कौन दीटा सेल भितर जंक्शन होकर रहा गोटे पैच टाइप रो काम करथिबो बा पैच टाइप रो थिबो है। ए सेल जंक्शन और इंटरसेलुलार ब्रिज है ताको कह जाए इंटरसेलुलार ब्रिज भी कहीं कह जाए। देख मनकर यहाँ गोटे सेल अच्छी ये गोटे सेल अच्छी तो दी जन भितर ये प्रकार कौन थी गोटे ब्रिज टाइप रो थिबो बा जंक्शन थिबो ताको इंट्रासेलुलार ब्रिज भी कह जाए है। is a type of structure that exists within the tissue or some multicellular organism such as animals है। Cell junction consists of strand of proteins or multi-protein complex that provide contact between the neighboring cell or between the cell and the extracellular matrix। तो बेसिकली ये कौन तैयारी बेसिकली ये प्रोटीन रे तैयारी जो स्ट्रांड अच्छे से स्ट्रांडटा प्रोटीन रे तैयारी कि मल्टी प्रोटीन द्वारा मध्य तैयारी। तो ये प्रोटीन रे तैयारी होइथिबारु ये कौन करे जोड़ा नेबरिंग सेल सहित से कौन करे गोटे कांटेक्ट क्रिएट करि पारे बा कांटेक्ट करि पारिबो ताकू। ठीक अछि। तो देखो दे आल्सो बिल्ड अप द paracellular barrier or of एपिथेलिया एंड कंट्रोल द पारासेलुलार ट्रांसपोर्ट। आउ मध्य ता भीतर कौन थाए एपिथेलिया थिबो बा पारासेलुलार बेरियर थाए। बेरियर काम कौन पारासेलुलार बेरियर माने कौन ये बेरियर काम थाए जब एपिथेलियर काम थिबो सेमान भितर जो किसी भी जदि ट्रांसपोर्ट हम से ट्रांसपोर्ट को से बेरियर हिसाब से अटकेबा साहाय्य करे। ठीक अच्छे। ताले गोटे सब्सटेंस को गोटे जगार आउ गोटे जगह ट्रांसपोर्ट करने को से देव नाही है। सेल जंक्शंस आर स्पेशली एबुडेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसिकली सेल जंक्शन टा कौन एपिथेलियल टिश्यू रे तैयारी। सेल जंक्शंस आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द एनाब्लिंग communication between neighboring cell via specialized protein called communicating junction। तो बेसिकली एटा कम्युनिकेशन करबा पई सुविधा हुए नेबरिंग सेल सहित जहाँकि कौन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन द्वारा तैयारी जहाँ आमे कम्युनिकेटिंग जंक्शन बोली कहू। ठीक अच्छे। सेल जंक्शन आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस प्लेस ओपन द सेल। आउ मध्य कौन करे सेल जंक्शन कौन करे सेल भितर जो स्ट्रेस अच्छे से स्ट्रेस को रिड्यूस करिबारे मध्य सहायता करे। तो जदि ये आम देखा केते प्रकार सेल विषय आम जाना देख देख सेल केते प्रकार आम सेल जंक्शन विषय जाना देख इन वर्टिब्रेट देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। गोटे होची ओक्लूडिंग गोटे होची एंकरिंग गोटे होची कम्युनिकेटिंग है आ गोटे होची प्लाज्मोडेस्माटा है। तो ओक्लूडिंग कौन ओक्लूडिंग होची टाइट जंक्शन invertebrate having several other type of specific function। for example जोड़ा होची septed junction or the C elegans apical junction। anchoring होची कौन adherence junction जोड़ा होची desmosome and the hemidesmosome। सेमती कम्युनिकेशन कौन जंक्शन और गैप जंक्शन। आउ तो रहा कौन प्लाज्मोडेस्माटा कौन ए मल्टीसेलुलार प्लांट है। जदि मल्टीसेलुलार प्लांट क्षेत्र देखा द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द सेल जंक्शन आर इंस्टेड प्रोवाइड फॉर द सेल वॉल है। द एनालॉग ऑफ कम्युनिकेटिव सेल जंक्शन इज इन प्लांट आर कॉल्ड प्लाज्मा डेस्माटा बोली कह जाए ताकू है। तो देख यही जगह आम जो देखा बेसिकाली तो यहीटा को तुम जो देखीदेव ये तुम बहुत किसी जानवा पाइब। जमी ओक्लूडिंग जंक्शन क्या कहुए सफ्ट टाइप हूँ टाइट जंक्शन
तापरे देख एंकरिंग जंक्शन में देख सब टाइप हूँ कौन आडेनेंस जंक्शन सेमती फंक्शन कौन फंक्शन प्रोटीन कौन एथिरे कौन अच्छी फंक्शन प्रोटीन एटा देखीदेव एटी एमती फंक्शन प्रोटीन कौन अच्छी एटा देखीदेव है तापर देख बेसिकाली ये देख स्ट्रक्चरल प्रोटीन एगुड़ा सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन देदेला तापर एंकर केमती होता है ताकू देदेला तो यही टेबुलेसन को भल भाव तुम मन रखीद बा स्क्रीनशॉट नहीं कि लिखिदेव है देख ये रहा कम्युनिकेटिंग जंक्शन देदेला है कौ प्रकार देती तुम जानीगल तो जदि ये जगह आम स्ट्रक्चर टाक देख देख ये जगह स्ट्रक्चर टाक देखी दो ये तुम कौन पाइज देख ये जगह देख यहाँ हूँ आम डेस्मोजोम जदि ये जगह को आम देखा यहाँ हूँ टोटाल हूँ डेस्मोजोम है डेस्मोजोम रे कौन कौन अच्छी तुम देखी दियो तापर देख एडेनेंस जदि देखा ये परसेंट हूँ आमर एडेनेंस है गैप जंक्शन कौन ये जगह हूँ आमर गैप जंक्शन है टाइट जंक्शन कौन ये जगह आम टाइट जंक्शन है तो तुम देखिपार गोटे स्ट्रक्चर देख कौ प्रकार कौन देती है एक तुमको मुदेदेवी पीडीएफ टाक तुम टेलीग्राम रे आज मु शेयर करदेवी आज ना काली है कारण यहाँ दीटा पार्ट आनिबा तो पीडीएफ टाक देदेले तुम सेठू डायग्राम टाक करदेव है तब ये देख डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन विथ एसोसिएट प्रोटीन तो बेसिकली देख गैप जंक्शन देख कौन आसला कनेक्शन केमती आसला आडेनिन जंक्शन देख एक्टिंग फिलामेंट अच्छी है कार्डेरिन तापर देख टाइट जंक्शन देख प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेस्मोजोम आसला देख कार्डेरिन जोटा हूँ केराटिन फिलामेंट अच्छी है तो यही प्रकार तार तुम देखा पाच है तो आज फास्ट देखा ओक्लूडिंग जंक्शन कौन तो ओक्लूडिंग जंक्शन कौन देख ओक्लूडिंग जंक्शन डिस्कवर बाय एम.जी. फर्क्यूहार एंड G.E. Palade in 1963 are also known as the tight junction ताको टाइट जंक्शन भी कहा जाए और जोनुला ओक्लूडेंट बोली कहा जाए जोड़ा हूँ सिंगुलर जोनुला ओक्लूडेंट है आर द क्लोजली एसोसिएटेड एरिया ऑफ टू सेल whose membrane joined together forming a barrier virtually impermeable to fluid अर्थात दीटा सेल टाइटली जंक्शन हेले आउ एथिरे कौन अच्छी बेरियर है कौन बेरियर है कौन प्रकार फ्लुइड को माने गोटे सेल आ गोटे सेल को ट्रांसपोर्ट करने को दियंती नहीं इम्परमिएबल हो जाए है इम्परमिएबल ऑफ फ्लुइड है इट इज ए टाइप ऑफ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ओनली इन द वर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट पाखे देखा जाए द कॉरेस्पोंडिंग जंक्शन दैट ऑकर्स इन द इनवर्टिब्रेट आर सेपरेट जंक्शन है occluding junction are found in epithelial cell एटा मध्य हमें पढ़ी एपिथेलियल सेल देखा जाए सच एज इंटेस्टाइन ऑफ एंड किडनी ट्यूबुल डक्ट कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर पैनक्रियाज कैपिलरी वॉल यूरिनरी ब्लैडर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लड ब्रेन बैरियर है एंड कोरोइड प्लेक्सस है तो आउ देख यही प्रकार जगह गुड़ाक सब देखा जाए तो ये सब एग्जांपल गुड़ाक तुम लिखिदे पार जे कौ जगह ओक्लूडिंग जंक्शन देखा जाए है टाइट जंक्शन एक्ट एज बैरियर दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बिटवीन द एपिथेलियल लेयर टाइट जंक्शन आर क्लासिफाई एज paracellular barrier which is defined as not having directional discrimination. However, movement of the solute is largely depend upon the size and the charge. है तापर जब नेक्स्ट देखा देर इज एविडेंस टू द एविडेंस सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर इन व्हिच द सॉल्यूट पास थ्रू द समव्हाट लाइक पोर तो पोर टाइप स्ट्रक्चर थी से जहाँ द्वारा कि कौन हम सल्यूटा कौन पास करि पारे है फिजियोलॉजिकल पीएच प्लेज a part of the selective of solute passing through the tight junction with most tight junction being slightly selective of cation तो बेसिकली एमानकर जो पीएच अच्छी पीएच मध्य गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे
कोथिपाई जोटा कि सल्यूटा को पासिंग करबा पई माने किछिटा सिलेक्टिव सल्यूट सब तो सल्यूट करि पारे माने किछिटा सिलेक्टिव सल्यूट को पासिंग करिबारे से सहाय्य करे टाइट जंक्शन थ्रू रे हैला आ विथ मोस्ट टाइट जंक्शन बीन स्लाइटली सिलेक्टिव फॉर कैटायन जोटी कैटायन भी थाए टाइट जंक्शन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलिया आर सिलेक्टिव फॉर सल्यूट ऑफ डिफरेंट साइज चार्ज एंड पोलारिटी आउ मध्य डिपेंड करे जो प्रकार सिलेक्टिव सल्यूट को पास करबा पई जो मानकर कि साइज किंबा चार्ज आ पोलारिटी रो इंपोर्टेंस अछि जे को प्रकार सल्यूट एटी पास करि पारिबो तो मन कर देख जदि फास्टला प्रोटीन देर हैव बीन approximately 40 protein identified to the involved in the tight junction. These protein can be classified 4 major category. That is scaffolding protein, signaling protein, regulation protein आउ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो 4 प्रकार प्रोटीन को भाग कराई टोटल 40टा प्रोटीन देखा जाए तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन कौन ऑर्गेनाइज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन couple transmembrane protein to other cytoplasmic protein as well as acting filament है signaling protein कौन involve the junction assembly barrier regulation and gene ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ हूँ तार फंक्शन से रेगुलेशन प्रोटीन कौन रेगुलेट मेम्ब्रेन वेसिकल टार्गेटिंग है तापर देखो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन इंक्लूडिंग जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल जोटा JAM बोली कहा जाए occluding and clotting. It is believed that clotting is the protein molecule responsible for the selective permeability between the epithelial layer तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन तो क्लोडिंग होची जो प्रोटीन टा से प्रोटीन रो काम है कौन से सिलेक्ट करे परमिएबिलिटी करबा पई को प्रकार सब्सटेंस को से परमिएबल करि परिबो ताको से सिलेक्टिव करे बिटवीन एपिथेलियल लेयर हैला तब देखो फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सील हैला दे सील द टू सेल टाइट सीलिंग जंक्शन as fusion barrier or permeability barrier for specific molecule and ion depending on the functions of the cell. For example, let us consider the interstitial जो epithelial cell है epithelial cell है इटा ई लिखी दे epithelial cell है तो it has the two surface जो apical surface गोटे facing to the gut lumen and the basolateral surface facing to the extracellular fluid है तो ये प्रकार हमें एग्जांपल दुईटा को नहीं परिबा तो देखो the functions of the cell is to retain the gut content for a certain period and allow some of the molecule to enter into the cell from the gut है तो ये यार काम कौन जे gut रे किछिटा सब्सटेंस को से होल्ड करके रखे एवं जोटा दरकार ताको से कौन करबो सेल भीतर को पास करबा पई सहायता करे है from the cell to the extracellular fluid है in addition the cell should also prevent the reverse movement of molecule on either side आउ मध्य सेल काम कौन ये जो सब्सटेंसटा सेल भीतर को प्रवेश करे आउ ताको से रिवर्स आउ थरे पठेबो नाही जेमते हला सेही जगह सेटा रहइबो हला तो तापर नेक्स्ट देखो the region between the plasma membrane of the epithelial cell is made up of occluding junction तो एटा हम जानि छु plasma membrane of epithelial सेटा occluding junction इत्यादि which are strand of the protein tight junction are the composed of the branching network of sealing strand each strand acting independently from the other है therefore the efficiency of the junction is preventing ion passage increase exponentially with the number of the strand है तो देखो each strand is formed from a row of transmembrane protein embedded in the both plasma membrane with extracellular domain joining one another directly से माने एक अन्य को join करके थांती है ना all the more protein are present in the major type of
clothing hela and the occluding. These associate with different peripheral membrane proteins such as ZO1 located on the intracellular side of the plasma membrane hela आउ मध्य कोन देखो plasma membrane which anchor the strand to the acting component of the cytoskeleton hela thus tight junction join together the cytoskeleton of adjacent cell. These protein are transmembrane adhesion protein hela एको transmembrane adhesion protein बोली कहू आमे they bind the two membranes दुईटा membrane को समान bind करंती so tightly that the diffusion barrier is established जे एते tightly समान membrane दुईटा को bind करंती जे समान को भीतर diffusion हेई पारे नाही barrier हेई जाय ताको हला because of this reason this junction is called tight junction जेहेतु माने tightly एक अन्य को bind करी रखंती तने ताको tight junction कहा जाय out of the two tight junction protein clothing is essential for the formation and function of the tight junction hela whereas the function of the occluding is unknown occluding रा function हमें जानी नो किंतु clothing रा हमें जानी गलो both clothing and occluding are anchored to the acting cytoskeleton via जरा होती जोनुला occludin protein है ना जेडो protein बोली कहा जाए है in intestine tight junction confine the transport protein to the corresponding surface or membrane or domain है thereby establishing the diffusion barrier एटी diffusion barrier से में है जाए in the following example tight junction model is explained by using transcellular transport of the glucose in intestine. तो देखो ये टाइट जंक्शन मॉडल लो देखिबा में कौन देइची तो बेसिकली ए जगह देखो स्ट्रक्चर टा को हम प्रथम देखि देबा तो देखो ये जदि हम देखिबा एटा होची स्ट्रक्चर तार रहिला हैला एटा होची ग्लूकोज देइची गॉट लुमेन हला एपिकल सरफेस टाइट जंक्शन को जगह देखिलो हैला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जेटी ब्लड अछि ता तलको जस्ट ब्लड बाहरला हैला तो एटा होची त टोटल स्ट्रक्चर टा को प्रथमे तमे देखि दियो बा स्क्रीनशॉट नेकी खाता लिखि दियो तापर हमें ता विषय रे पढिबा तो देखो टाइट जंक्शन कोन कहला टाइट जंक्शन मॉडल इन transcellular transport है तो एटा कौन सी टाइट जंक्शन एंड द ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिंपोर्ट in needed for the transport of glucose from the lumen into the cell. The symport protein is confined to the apical surface. Subsequently, the glucose has to come out of the cell to reach the extracellular fluid via the facilitated diffusion. Facilitated diffusion द्वारा कौन होता है ग्लूकोज टा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड रु थ्रो रे बाहरी आसे है जोड़ा होची mediated by the glucose barrier protein. This protein is confined to the basolateral region in the membrane है the tight junction are between the two surface so that they not only confine the transport protein but also prevent the backflow of the molecule एवं ये कौन ये तो बैरियर हिसाब रे जो प्रकार काम कला ठीक अछि आहुरी मध्य बैकफ्लो रो मध्य रक्षा करथाय ठीक अछि अर्थात रिवर्स पुणी थरे आउ थरे भीतर को पसिबा पई देबो नै हैला इन इनवर्टिब्रेट द ऑक्लूडिंग जंक्शन आर कॉल्ड septed junction हैला septed junction are made up of the parallel elongated protein strand that form band like structure. They are formed and made कौन functional by the protein called the disc large. तापर देखो एंकरिंग जंक्शन जदि देखिबा तो एंकरिंग जंक्शन रो स्ट्रक्चर देखो हैला ए प्रकार दुईटा भितर एंकर हेकी अछि एटा होची एंकरिंग जंक्शन देखो ए जाडा होची एंकरिंग जंक्शन अछि हैला तो भीतर तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट अछि आ ए ताको जो एटा होची एंकरिंग जंक्शन ए प्रकार एंकरिंग जंक्शन हेकी रहिछि हैला तो देखो एंकरिंग जंक्शन कोन दैछि देखो
cell within the tissue and organs must be anchored to one another and attached to the compartment of the extracellular matrix. Cell have develop several type of junctional complex to solve these function, and in each case anchoring protein extend through the plasma membrane to link cytoskeletal protein in one cell to cytoskeletal protein in the neighboring cell है as well as to protein in the extracellular matrix है In doing so, anchoring junction transduce force from the cytoskeleton to the ECM or to the other cell, which is not possible by the filmy lipid bilayer of the membrane. These junctions are most abundant in the tissues that are subject to constant mechanical stress such as skin and heart, because basically it is skin and heart पाखे देखा गला. Therefore anchoring junction is predominant in the tissue such as skin, muscles and heart where they under mechanical stress. Anchoring type of junction not only hold the cell together but provide tissue with structural cohesion है आ मध्य cohesive type रो काम करता है A model of anchoring junction is shown in the figure. आमे जोड़ा आमे देखिया को पाउछु ए मॉडल टा देखिया को पाउछु है तो ये जगह देखो प्रोटीन एंकरिंग जंक्शन देखो को प्रकार प्रोटीन टा ताको होल्ड करके रखी छी है तो देखो anchor protein are distributed in the contact with the cytoskeleton acting or intermediate filament. Transmembrane adhesion protein spans the membrane of the protein on the either side of the membrane. The intracellular domain of the adhesion protein is associated with the anchor protein, whereas the extracellular domain is associated with the either the extracellular domain or adhesion protein from the another cell or with the ECM. The four type of anchoring junction are observed and differ from one another. जोड़ा होची कौन देखिबा हमें हैला तो ता पूर्व देखो साइटोस्केलेटल प्रोटीन एंकर एज वेल एज द ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन दैट एक्सटेंड थ्रू द मेम्ब्रेन हैला तो देखो ये प्रकार देखो चारिटा देखो डेस्मोजम हेमिडेस्मोजम एडेनेंस जंक्शन आउट जे फोकल एडेशन जोड़ा तार साइटोस्केलेटल एंकर किए देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्टिंग फिलामेंट एक्टिव फिलामेंट ताको कार्डेरिन इंटेग्रिन तब देखो कार्डेरिन इंटेग्रिन है सेम देखो अदर सेल सी मैट्रिक्स किंबा अदर सेल इसी मैट्रिक्स तो एगुटा सब मन रखिदे फिगरटा को देखिकी मन रखिदेव है तो adherence function कोन हम देखिबा adherence function promote cell communication by the interlinking their acting filament है the transmembrane adhesion protein in adherence junction are formed cadherin family एटा अछि cadherin family रो the cadherin protein are linked to the acting bundles via anchor protein such as कोन catenin किंबा p catenin किंबा जोड़ा होचे आमे y catenin किंबा a actinin हैला एंड vinculin हैला तब देखो adherent junction is like between the two tight junction जोड़ा होचे encircling the जोड़ा होचे interaction cell forming adhesion belt called zonula adherent हैला तापर देखबा हमें देखबा जदी फोकल एडहेरेंस को देखबा एडहेशन को देखबा तो देखो sport like adherence junction helps cell adhere to the extracellular matrix both in the vivo and in vivo है ना in vitro है ना vivo and in vitro where they are called focal adhesion connect the acting filament of the cytoskeleton with the ECM
focal adhesion are component of the transmembrane adhesion protein of integrin family है किए को फैमिली रू बिलोंग्स करुच किए क्या सहित कनेक्शन होगी रही तुम टिके देखीदेव मन रखिब है तो यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चरटा देखा पाच यही प्रकार अच्छी है तापर देखा डेस्मोजोम देखा डेस्मोजोम देखिए डेस्मोजोम्स डिस्कवर बाय द के आर पोर्टर इन 1954 लाइक adherens junction are made up of protein from the cadherin family एटा मतलब cadherin family तैयारी but they are connected to the intermediate filament via anchor protein है तो ये anchor protein होची they are responsible for the maintaining of the integrity of the skin epithelial cell मन रखिल तापर नेक्स्ट देखिबा हमें हेमिडेस्मोजोम देखिबा हेमिडेस्मोजोम होची आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन फैमिली ये मतलब इंटीग्रिन फैमिली रहला दे कनेक्ट द इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ द सेल विथ द ईसीएम हेमिडेस्मोजोम कोन are morphologically similar to the desmosome but they are connect basal surface of the epithelial cell to the underlying basal lamella है the integrin protein of the desmosome has its extracellular domain connected to the laminin protein of the basal lamina है the intracellular domain is connected to the keratin filament through the anchor protein called the प्लाक्टिन तो एंकर प्रोटीन को ये प्लाक्टिन बोली कह जाए तो ये रहा हेमिडेस्मोजोम जान तुम्हें तो आज आम दुईटा विषय पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे कम्युनिकेटिंग जंक्शन गोटे रहा तापर प्लाज्मोडेस्माटा जोटा रहा गैप जंक्शन ऑफ प्लांट सेल ता विषय आम पढ़ा तो आज तो ये नेक्स्ट क्लास अधिक पढ़ा थैंक यू।